those. Okay, question 16, second and third part. Okay. 18. Okay, first let's do question 16. Yes, Ramesh, you can. Okay, I hope सबके पास worksheet तो है. So question 16 first. Let me see the question 16. Okay, in the worksheet, question 16 is, yeah, that was tricky. अच्छा question था. Okay, मैं इस question को complete कर रहा हूँ. Question 16. Question 16 is x is equal to a cos raised to power 4t, y is equal to a sine raised to power 4t. So in part 1, it says where a is a positive constant, we need to find dy by dx. We need to find dy by dx in terms of t. Okay, let's find that. Dy by dx. We know to find dy by dx, we need to differentiate both parametric equations, x and y. I mean, x ko if you differentiate, it will be dx by dt. Because a is coefficient, it's a constant, it will stay as it is. So cos 4t ko if you want to differentiate, so first you need to apply whole power rule. Whole power rule mein 4 will become the coefficient, already a bhi hai, so 4a and whole power 3. And then the derivative of base, mean the derivative of cos t is minus sine t. So I'm writing minus sine t. So this is basically minus 4a cos cube t sine t. This is your dx by dt. Now dy by dt, similarly, its differentiation will be 4a sine cube t into the derivative of sine t is cos t. Now we'll apply chain rule. Our dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. Let's plug the values. Dy by dt is 4a sine cube t cos t, and here it is dt by dx. We have dx by dt, so it's a reciprocal of that. So it will be minus 4a cos cube t sine t in the denominator. So finally, we'll get dy by dx. 4 and 4, a and a will be cancelled out, so we will get minus sine cube t, and one of the sine t from the denominator will be cancelled out. So you'll get sine square t over cos square t. So our dy by dx, we can write our dy by dx as minus tan square t. G part 1 was easy. Okay, Daniel Hassan is asking for actually second part. Okay, second part of this question is, show that the equation of the tangent to the curve at the point with parameter t is
x sine square t plus y sine square t is equal to a sine square t cos square t. Okay, we need to find the equation of tangent at parameter t. So at parameter t, what's the gradient? Your gradient is tan square t. To find the equation of tangent, y minus y1 is equal to m into x minus x1. We need a point, we need a gradient and one point. So gradient in terms of t, in parameter t is tan square t. And what are the points? Your x coordinate is this one, a cos 4t, and y coordinate is a sine 4t. Let's use these to find the equation of tangent. So second part, equation of tangent, y minus y1, equation of any straight line is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Plug the values of gradient and the points x1, y1. Your y is a sine 4t. Gradient is minus tan square t. Your x is a cos 4t. This is the equation of tangent. Equation of tangent तो आ गई है, but we need to bring a specific form. और वो form क्या लानी है हमने? We need to bring x sine square t plus y cos square t is equal to a sine square t cos square t. We want to bring this particular form of the equation of tangent. So see, the required form जो हमें चाहिए उसमें कहीं पे tan नहीं है. So we need to change our tan into sine over cos. So y minus a sine 4t, tan square t can be written as sine square t over cos square t. Multiply this cos square t here or minus sine square t को इधर अंदर multiply कर दें. So we will get y cos square t minus a sine 4t cos square t is equal to minus x sine square t plus a sine square t cos 4t. When we are proving something, so we need to keep an eye on the required answer. Or required answer में on the left side we need x sine square t, y sine square t. So shift these two values, keep these values on the left and remaining on the right. Mean इस minus x sine square t को हमें shift करना होगा left side पे. So it will become positive x sine square t. And what else we need on the left side? Y cos square t. So this y cos square t will stay here as it is. So we need these two values on the left. So अब इसको minus a sine 4 cos square t को we should shift this on the other side. So already on the right side it is a sine square t cos 4t plus a sine 4t cos square t. So almost left side to exactly we have that. अब right side को हमें वो बनाना है. We need to make it a sine square t cos square t. बताएगा कोई कैसे होगा ये? Your left side as it is. If all the cameras are on, I can change the setting to allow you to unmute yourself. Ji, Sayyid Raza, Safi, Ramesh, Safi, Minhal, please switch on your cameras. You can unmute yourself now if you want to answer. Ji, what should be the last step to bring your right side a sine square t cos square t?
नॉट अ डिफिकल्ट स्टेप, आप कर सकते हैं, थोड़ा सोचें। दानियाल इज सेइंग टेक ए साइंस स्टडी, इतना टाइम आपको लेगा लिखने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था, अनम्यूट किया था ताकि आप जल्दी से बता सकें। सो यस, यू आर राइट दानियाल, हमें ए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेना पड़ेगा, और जब कॉमन लेंगे तो इनसाइड आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और वो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाता है और ये प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स टेक कॉमन, कॉमन इज ए साइन स्क्वायर टी cos square t, and inside we will get cos square t plus sin square t. So cos square t plus sin square t is 1, तो हमारे पास प्रूव हो गया, mean x sin square t plus y cos square t is equal to a sin square t cos square t. So this is the required equation of tangent. So tangent एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली और प्रूव कर ली कि इट इज x sin square t plus y cos square t is equal to a sin square t cos square t. That was second part. Okay, question 16, third part now. Hence, we need to use these previous parts. Hence, show that if the tangent meets the x-axis at P and the y-axis at Q, then we need to prove that OP plus OQ is equal to A. OP plus OQ is equal to A, where O is the origin. अब हमें ये प्रूव करना है कि O से P तक जो लेंथ होगी और O से Q तक जो लेंथ होगी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर A आएगा। ये हमने प्रूव करना है। If I read the statement of the question again, hence show that if the tangent meets the x-axis at P and the y-axis at Q. Okay, मैं एक रफ सा एक स्केच बनाता हूँ. Suppose this is your x-axis and y-axis, and say this is your tangent. ये एक रफ सा आइडिया है, हमें एक्चुअल टेंजेंट किस तरह बन रहा है वी डोंट नो. सपोज दिस इज द टेंजेंट with the blue color. It says if the tangent meets the x-axis at P, meets the x-axis at P and meets the y-axis at Q, we have to prove that OP, O is here, O से P तक लेंथ, ये वाली लेंथ, और O से Q तक लेंथ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो you will get A. अब मैं इसमें आइडिया क्या होगा, इस क्वेश्चन में आइडिया इज कि P is on x axis, so we know its y coordinate is 0. Q is on y axis, so its x coordinate is 0. So the equation of tangent में आप पहले y0 पुट करेंगे तो you will get the x coordinate. Suppose मैं करता हूँ एक केस लेता हूँ कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में 0 पुट किया और आपका x कोऑर्डिनेट आया 3, मीन दिस पॉइंट इज 3. और अगर आपने उसमें x0 पुट किया एंड यू गॉट y4, सो व्हाट इज द लेंथ, तो इसका ये पॉइंट 4 है, सो OP प्लस OQ क्या होगा इन दैट केस, सो OP इज 3 प्लस OQ विल बी 4 एंड आंसर विल बी 7 इन दैट केस. बट हमें स्पेसिफिकली उस टेंजेंट की इक्वेशन को यूज करना है. You use that equation, first put y0 and then put x0 to get the coordinates of P and Q, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. And the equation of tangent we have already from in our second part. So the equation of tangent was x sine square t plus y cos square t is equal to a sine square t cos square t.
दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो पहले हम पुट करते हैं y0 अगर हम y0 करें तो यू विल गेट x sin square t is equal to a sin square t cos square t. So from here your x will be a cos square t, means sin square t तो cancel हो जाएगा. If we put x0, so you'll get y cos square t is equal to a sin square t cos square t. So your y will be a sin square t. So आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता चल गए हैं. अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं OP plus OQ. We need to prove that this is equal to A. Okay, OP, P mean the x coordinate. This is the A cos square t. OP is the length from O to P, और P का x coordinate आपके पास A cos square t आ चुका है. So it means OP is A cos square t and OQ is A sin square t. हमने प्रूव करना है कि OP plus OQ is equal to A. प्रूफ हो गया. Take A common. So cos square t plus sin square t is equal to 1. So it is equal to A. Tamur is asking, will we start AS from Monday? Tamur, we have to follow the instructions from the admin and we are waiting for that. अभी तक कुछ ऐसी instructions नहीं आई. अगर हमें ऐसी मिलती instructions कि मंडे से स्टार्ट करना है तो हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे. अगर नेक्स्ट वीक से या उसके बाद, so we are waiting for the final verdict about that. वो सिर्फ 15 अगस्त से नहीं था. मुझे भी कुछ ऐसा ही याद पड़ता है कि कुछ ऐसा ही था, 15 अगस्त ही था, लेकिन मुझे वो कि ऐसा कोई नोटिस मुझे मिल नहीं रहा. हमें भी था कुछ, मुझे याद पड़ता है ऐसा था कुछ के 15 अगस्त, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमें पता चल जाएगा कि क्या हम मंडे से रिवीजन ही करेंगे या क्या करेंगे. लेकिन एक्सपेक्टेड यही है, बट लेट्स सी. मेरी भी प्लानिंग जो चल रही थी वो ऐसी चल रही थी कि 15 अगस्त तक में A2 का सिलेबस डिफरेंशिएशन तक या इंटीग्रेशन अगर हो सके तो बट लेट्स सी. उम्मीद है थर्सडे तक, आज वेडनेसडे, हाँ जी, कल तक क्लियर हो जाएगा. सो दैट वाज क्वेश्चन 16. आई होप दानियाल ये आपको क्लियर है. उसके बाद क्वेश्चन 19. लेट्स डू क्वेश्चन 19. Okay, question 19. Again, the parametric equations are given. X is equal to t minus tan t and the y is equal to ln cos t. The value of t is in between minus half pi to pi, minus pi by 2 to plus pi by 2. We need to prove that dy by dx is cot t. Part 1 कह रहे हैं या दोनों? चलें पार्ट 1 से हम स्टार्ट लेते हैं. हमें dy by dx प्रूव करना है cot t,
Okay, first differentiate x is equal to t minus tan t. So dx by dt will be, the differentiation of t is 1. The differentiation of tan t is secant square t, right? And y is equal to ln cos t की differentiation dy by dt is, we know कि differentiation of ln x is 1 over x, so it will be 1 over cos t. और फिर x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन t, वो आगे मल्टीप्लाई होगा. सो मैं उसको न्यूमरेटर में लिख देता हूँ, माइनस साइन t हियर. Apply chain rule. Your dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. What is dy by dt? It's minus sine t over cos t, and dx by dt will be 1 over 1 minus secant square t. ठीक हो गया. अब जो प्रूव करना है वो क्या था, जरा उसको देखते हैं. We need to bring dy by dx as cot t. ये cot t लेके आना. So sin t over cos t को तो हम cot की तरफ लेके जा सकते हैं. What about this 1 minus secant square t? इसको आप tan की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं. You know the identity 1 plus tan square. 1 plus tan square t is secant square t. We know this. We know this identity. 1 plus tan square t is equal to secant square t. Mean 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So यहाँ से you can write 1 minus secant square theta, 1 minus secant square t is equal to minus tan square t. So it means we can replace 1 minus secant square t with minus tan square t. अब क्योंकि वो tan है तो इसको भी आप tan, sin over cos is tan t. This is tan t and that is minus tan square t. Now tan and tan cancel, minus minus cancel, 1 over tan आ जाएगा and 1 over tan is cot. So this is 1 over tan t, which is cot t. So this is your dy by dx cot t. Again, अगर आप देखें तो डिफरेंशिएशन आपकी कंप्लीट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपने कर ली थी इधर तक, उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, मीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द सेंस कि आपको लेके क्या आना है, व्हाट वी नीड टू ब्रिंग कॉट, तो उसके मुताबिक आपने वर्किंग की. Okay, second part of question 19. Hence find the x coordinate of the point on the curve at which the gradient is equal to 2. Give your answer correct to 3 significant figures. जी gradient 2 put कर दें second part के लिए. It says find the x coordinate of the point on the curve at which the gradient is equal to 2. So already we have कि dy by dx is equal to cot t. So gradient is 2. So gradient is 2. तो dy by dx को हम लिख देते हैं 2. So cot t is equal to 2. हमें क्योंकि बेसिक एंगल फाइंड करना है, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स हमारे कैलकुलेटर में नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको tan में चेंज कर लेते हैं. सो 1 tan t is equal to 1 over 2. Now find the basic angle. Find the basic angle tan inverse 1 by 2. What is tan inverse 1 by 2?
calculator mode should be in radian, because the question originally it says the range is minus pi by 2 to plus pi by 2, mean in radian. Tan inverse 1 by 2, what's the answer? 0.46 and आगे 3 significant figure 464. Writing your answer here correct to 2 decimal place, correct to 2 significant figure mean you are losing the marks. ओ लेवल में शायद इग्नोर करता था, हालांकि इंस्ट्रक्शन वहां पे भी होती थी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वो आपको आपके साथ लीनियर नहीं होगा. सो बेसिक एंगल इज दिस. अब आपकी क्वेश्चन में रेंज थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मीन माइनस 92 प्लस 90. अब 10 पॉजिटिव होता है, कहां पे 10 पॉजिटिव होता है? 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में. सो इसका मतलब कि फर्स्ट राउंड मीन 0 टू पाई बाय 2 सिर्फ वही आंसर पॉसिबल है. 0 टू माइनस पाई बाय 2 जो है उसमें पॉसिबल ही नहीं है. फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैसे ही आंसर पॉसिबल नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि 10 तो पॉजिटिव है. 10 पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है. सो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही आंसर होगा. मीन योर टी इज इक्वल टू 0.464, वही जो आपका बेसिक एंगल है. एंड रिमेंबर दिस इज टी. Where the original question is आपको फाइंड करना है x. We have to find x. X is equal to t minus tan t. You need to find the x coordinate. तो आपके पास जो t की वैल्यू आ गई है वो यहां पुट करें. You are looking for the x coordinate. So x is t minus tan t. X is equal to t minus tan t. Here t is, अगर आप इसमें 0.464, क्योंकि 0.464 आपका फाइनल आंसर नहीं था, अगर आप इसको ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते, मीन 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते तो ज्यादा बेहतर था. बट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 0.464 एंड माइनस 10t को आप बेहतर है 1/2 यूज कर लें. या आई एम रिपीटिंग कि ये जो आपका आंसर था 0.464, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा, दैट वाज नॉट योर फाइनल आंसर. तो आप इस प्रीवियस आंसर्स को, जब आपके फाइनल आंसर होते हैं उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है, लेकिन उससे प्रीवियस वाले 3 से ज्यादा में लिखें तो बेहतर होगा. मीन 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बट 3 से इनकरेक्ट नहीं होगा. जी हसन. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I wanted to ask that why did we just take the positive value of t? Because in the question they said minus pi by 2 as well. जी आई एक्सप्लेन दिस रीजन, क्योंकि आपका 10t पॉजिटिव है और 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में. Sir, I didn't see. I thought it was. 0 to minus pi by 2, Sir, I 0 to understand now. minus pi by 2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है. जी इसकी कैलकुलेशन करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है. 0.464 minus 1 by 2. Sir, minus 0.036. So minus 0.036 लिखेंगे तो आपको आंसर मार्क नहीं मिलेगा. ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं इस्माइल, जो कि हम पेपर करते वक्त हमारे ऊपर, अभी तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है. तो हम देखें आपने आंसर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बोला है, तो वहां पे तो एग्जाम प्रेशर होगा, वहां पे तो आप और भी मिस्टेक्स करेंगे. सो ये देखें, ये आपका क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट कितने मार्क्स का था? दैट वाज ऑफ क्वेश्चन 6 18 19 था ना, 2 मार्क्स का था. आपने आंसर 0.036 लिख के 2 में से सिर्फ 1 मार्क गेन किया. सर वही कैलकुलेट करके आया था आंसर. आप
का 0.0364 नहीं आया? नो सर, मैंने 0.464 माइनस 1/2 करके इट्स माइनस 0.036। ये -0.364 आ रहा है ना जी। इस्माइल, आप कैलकुलेशन अपनी चेक करें। इसको माइनस करने से -0.0364 आता है। आप मुझे 0.036 तक बोल रहे हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर चेक करें, क्या आपका यही आ रहा है? नो दानियाल, अगर आप फ्रैक्शन में भी लिखेंगे तो आपका मार्क लूज होगा। क्यों लूज होगा? क्वेश्चन में उसने बता दिया है। क्वेश्चन में उसने क्या, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो एक दफा क्वेश्चन दोबारा पढ़ा करें। आपके 11 क्वेश्चंस होते हैं अराउंड पेपर में, और कुछ के 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ के 3 पार्ट्स होते हैं। अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से अराउंड 12-13 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आंसर नॉन एग्जैक्ट आ रहे होते हैं, और आप उनकी कभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की जगह 2 लिख रहे होते हैं, कभी 4 लिख रहे होते हैं, कभी फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो 12 to 13 मार्क्स आप अनइंटेंशनली लूज कर रहे होते हैं। and 12 to 13 marks mean 2 grades। ए और सी में ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक से दूसरे ग्रेड में ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का गैप होता है। जी हसन। So could you also do question number 18? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करूंगा जी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 19? ओके, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में कुछ एक डायग्राम बनी हुई है। This is the point T1, this is the point T2, this is point T3, this is the point T4. It says the diagram shows the curve y is equal to 10 e raised to power minus 1 by 2x sine 4x. For x is greater than or equal to 0, the stationary points are labeled T1, T2, T3. I remember एक दफा इसी क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। उसने क्वेश्चन ही अपना स्टार्ट में ये लिखा y is equal to 10 e raised to power minus 1 by 2x। उसने गलती से sin 4x देखा ही नहीं और अपना पूरा क्वेश्चन इसके मुताबिक सॉल्व कर दिया। और वो स्टूडेंट था जो कि ए और ए स्टार लेने वाला था। क्या ग्रेड आया वो तो खैर खुद ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स तो उसके स्ट्रेट अवे यहां से लूज हो गए, क्वेश्चन ही गलत पड़ा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन गलत रीड करने से आपको फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। मीन यहाँ पे अगर 10 e raised to power minus half x sin 4x की जगह अगर आप cos 4x लिख देते हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चन की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर sin 4x रिमूव कर दें तो 10 e raised to power minus half x की डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी हो जाती है, तो क्वेश्चन का लेवल डाउन हो गया, तो अब आपको उसके मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। मीन 10 मार्क्स स्ट्रेट अवे आप यूज करेंगे। सो क्वेश्चन भी केयरफुली लिखा करें। ओके, द क्वेश्चन सेज in part 1, it says the stationary points are labeled T1, T2, T3 and so on. Find the x coordinates of T1 and T2, giving each coordinate correct to 3 decimal places. अच्छा, यहां पे ये याद रखें, जब ये अब मुझे अगर आपसे यहां पूछो कि ये 4x, अक्सर क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता होता कि वो एंगल x जो है वो डिग्रीज में है या रेडियन में है। तो यहां पे x is greater than equal to 0 आपके पास कह रहा है। आप दूसरा यहां पे देखें e raised to power minus half x, ये जो x है e raised to power तो कोई डिग्रीज में नहीं हो सकती ना, मीन डिग्रीज में नहीं होगा। तो डिग्रीज के लिए स्पेसिफिक अगर कहीं मेंशन ना हो तो डिग्रीज से आपको पता चल जाएगा कि वो एंगल है। लेकिन e raised to power में अगर x आ गया तो इसका मतलब ये एंगल वो डिग्रीज वाला नहीं है।
तो अगर वो एंगल स्पेसिफिकली नहीं है तो आप फिर यूनिट रेडियन भी यूज किया करेंगे। और दूसरा मुझे कैसे पता चला कि ये रेडियन या डिग्रीज नहीं है, जब उसने क्वेश्चन में लिखा है ना राइट योर एक्स कोऑर्डिनेट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, आप नॉर्मली अपना एंगल डिग्रीज वाला 34.378 डिग्रीज नहीं लिखते, आप रेडियन वाले को इतना 3 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं। सो इसमें क्वेश्चन में थ्रू आउट यू नीड टू यूज रेडियन। Okay, but the question is find the x coordinate of t1 and t2, and we know t1 and t2 are the stationary point. How to find the coordinates of stationary point? We need to put dy by dx 0. लेकिन हम dy by dx पुट करेंगे तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट t1 भी आ जाएगा, t2 भी आ जाएगा, t3 भी आएगा, t4 भी आएगा और आगे वाले भी आएंगे, बट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टू t1 and t2। चलें फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या इसमें आता है। सो dy by dx, I'm going to apply product rule. So 10 I'm keeping outside. I'm keeping e raised to power minus 1 by 2x as first function, sine 4x as second function. E raised to power minus 1 by 2x की differentiation is minus 1 by 2 e raised to power minus 1 by 2x. Sine 4x as it is. ये मैं डायग्राम रिमूव करूं, आपके पास बनी हुई है। Plus derivative of sine 4x is 4 cos 4x e raised to power minus 1 by 2x as it is. ये आपके पास dy by dx आ गया। Put dy by dx is equal to 0. और 10 e raised to power minus 1 by 2x मैंने कॉमन ले लिया। Inside I have now minus 1 by 2 sine 4x plus 4 cos 4x. Now either this is 0, either 10 e raised to power minus 1 by 2x is equal to 0, or minus 1 by 2 sine 4x plus 4 cos 4x is equal to 0. ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेंगे तो ln 0 अनडिफाइन होता है। सो दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए यू नीड टू मेक इट 10 क्योंकि एक सिंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग 4 cos 4x is equal to half sine 4x. 4 times 2 is 8 sine 4x over cos 4x. So we got tan 4x is equal to 8. We are solving now trigonometric equation. So trigonometric equation को कैसे solve करते हैं? First, you need to take tan inverse and find the basic angle. Tell me what's the basic angle? Tan inverse of 8. जी बताइए tan inverse of 8 क्या आ रहा है रेडियन में? to 3 decimal place हमने फाइनल आंसर लिखना है। जी बताइए बेसिक एंगल 1.45 ओके 1.45 शायद आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको आंसर अपने 3 डेसिमल प्लेस में लिखने हैं, तो बेसिक एंगल भी आप 3 डेसिमल प्लेस में लिखें ताकि आपके आंसर, अगर आपको, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं, अगर इसको आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें तो गलत नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 3 डेसिमल प्लेस वो आप जरूर लिखें। मीन व्हाट इज 1.45 एंड आगे प्लीज जल्दी कीजिएगा, हमें ऐसा सेकंड पार्ट एक्चुअली डिस्कस करना है। 1.446, so 1.446, so that's the basic angle. Now tan is positive, tan positive होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? बेसिक एंगल क्या लिखेंगे? x is equal to basic angle? No, 4x is equal to basic angle. So 4x is equal to 1.446, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 4x is equal to pi plus basic angle. जी solve these two, use your calculator and tell me what are the
answers for x. Three decimal place. Please. 1.446 divided by 4. What's the answer? Sir, for the first one, it's 0.362, and for the second one, it's 1.15. 1.15 लिखने से मार्क्स कटेंगे, unfortunately. Question says 3 decimal place, not 3 significant figure, 3 decimal place. Decimal के बाद 3 digits होने चाहिए. Okay, so इसका मतलब ये आपका T1 का x coordinate है और ये T2 का x coordinate है. My question, पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया. अगर वो कहता T3 और T4 के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो क्या करते हैं हम? तो ये हमने कैलकुलेशन की है फर्स्ट राउंड की. फर्स्ट राउंड जिसमें होता है बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल 180 प्लस 360 माइनस बेसिक एंगल. अगर फर्दर सेकंड राउंड की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको T3 और T4 मिल जाएंगे. मीन 360 प्लस बेसिक एंगल 540 माइनस बेसिक एंगल 540 प्लस बेसिक एंगल 720 माइनस बेसिक एंगल. बट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट इन केस मैंने आपको एग्जांपल दिए. जी सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है और आपका P1 का क्वेश्चन है, P1 से रिलेटेड है और आपकी P1 तो परफेक्ट है. The second part is, now see, the question says, it is given that x coordinate of Tn is greater than 25. Find the least possible value of n. वो लोग जो कहते हैं कि P3 में A2 में AS के क्वेश्चंस नहीं आते या नहीं आ सकते, उनके लिए ये क्वेश्चन है. ये कौन सा टॉपिक है? इट इज गिवन दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ Tn इज ग्रेटर देन 25. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बाद में करेंगे. ही सेज Tn is greater than 25. Which topic of P1 is this? ये P1 का टॉपिक है. चले टॉपिक बता दें, नाम बता दें, करना कैसे मैं बताऊंगा, बट नाम बता दें कि कौन सा टॉपिक है. Sequencer, sir. राइट राजा रुताब, इट्स सीक्वेंस. और सीक्वेंस में हमने 2 पैटर्न पढ़े थे, 2 प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मिनहल, व्हिच वन इज दिस? मिनहल, इज दिस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक? सर सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आई एम सेइंग के पूछ रहा हूं मैं कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये सीक्वेंस टॉपिक है, तो आप बताएंगे सीक्वेंस में 2 प्रोग्रेशन पढ़े थे आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ये कौन सा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? आपकी डायग्राम सामने बनी है, डायग्राम से तो खैर इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो इसके x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट है T1 का, ये x कोऑर्डिनेट है T2 का, ये x कोऑर्डिनेट है T3 का, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ T4. सो वो Tn की बात कर रहा है. सो विच प्रोग्रेशन इज दिस, अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? अरिथमेटिक में डिफरेंस कॉमन होता था, ज्योमेट्रिक में रेशियो कॉमन होती थी. सर ज्योमेट्रिक? ये ज्योमेट्रिक नहीं है, ये अरिथमेटिक है. कैसे अरिथमेटिक है आप देखें, आपका 10 था, फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है, नेक्स्ट थर्ड से आ रहा है. फिर दूसरे राउंड में जाएंगे, ये फर्स्ट राउंड की बात हुई, फिर दूसरे राउंड में जाएंगे तो फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा और थर्ड से आंसर आएगा, और इनमें गैप कितना बन रहा है? 180 डिग्री का. मीन हम रेडियन में कर रहे हैं तो यहाँ पे पाई गैप होगा. सो इट्स अ कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो डिफरेंस फाइंड करना होता है, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, पाई है.
फॉर्मूला में पहले आपके लिए लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस के लिए, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म थी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही थी nth term was a plus n minus 1 into d. अब ये क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन इज सेइंग के your tn is greater than 25. Your tn mean general nth term is greater than 25. tn is greater than 25. So tn is greater than 25 और tn होता क्या है a plus n minus 1 into d. a what's the first term? t1 और t1 हमने फाइंड की हुई, ये है t1. 0.362 is your first term, t1. 0.362 is your first term. So 0.362 plus n minus 1 into d, difference क्या है 180 डिग्री, रेडियन में पाई is greater than 25. तो आपके पास ये इनइक्वालिटी बन गई है. इस इनइक्वालिटी से हम पहले n फाइंड करते हैं. So n minus 1 into pi, इसके बाद अलजेब्रा सिर्फ 25 minus 0.362. So n minus 1, 25 minus 0.362 over pi, और n is g कैलकुलेशन करें 25 minus 0.362 over pi plus 1. What is n? Use your calculator. Tell me 25 minus 0.362 divided by pi plus 1 is what? .843. n is 8.843. अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा. क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. n डेसिमल में नहीं हो सकता. n is a term number. टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट n मीन टर्म नंबर डेसिमल में नहीं हो सकती. नाउ इट सेज n is greater than 8.8. तो greater than 8.8 में क्या आता है n? 9 10 11 12 13 up to infinity. So what is the least n? So least value of n is 9, क्योंकि यहाँ पे था n is greater than 8.8. So greater than 8.8 में इंटीजर नंबर जो बने, क्योंकि n इंटीजर हो सकता है, वो 9 10 11 12 13 हो सकते हैं. So least value is 9. जी, आई होप ये क्लियर होगा. इसमें भी देखें, ये आपका P3 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपकी नंबर पैटर्न, नंबर सीक्वेंस किसी जगह भी P3 के सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट ये आपके पास आ रहा है. सो प्रीवियस जो P1 आप करते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो सकता है. ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया. एक क्वेश्चन 20 रह गया है जो कि हमने डिस्कस करना है. कल हम वो डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर लेंगे. सो कल का लेक्चर प्लीज, कल का खैर कोई भी लेक्चर अब आगे मिस नहीं होना चाहिए. इंटीग्रेशन आपकी मेन आइडियाज कल हम स्टार्ट में कर लेंगे. कल हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसका. और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी थे. इसके क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं, आपने देखा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स भी इतने इजी नहीं है. वो इटसेल्फ टॉपिक भी मुश्किल है. सो डोंट मिस एनीथिंग फ्रॉम दैट टॉपिक. सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. सर. जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया. आप ठीक है सर.